Hello students, this video is for grade 1st. Let us start. This sheet is divided into 3 different parts in which we will study about 3 different subjects. Let us start with our first subject, which is of English. The question says, make sentences using given describing words. In this, what you have to do is, you have to make sentences with these words. यहाँ जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाने हैं. ओके, दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, मीन्स एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं और आपको क्या करना है, इनसे सेंटेंस बनाना है. लेजी, ही इज अ लेजी बॉय. ही इज अ लेजी बॉय. ब्राउन, my cat is brown in color. My cat is brown in color. Sweet, I love to eat sweets. Understood? In this way you have to make sentences. आप और sentences भी बना सकते हो. Like lazy है तो lazy से आप क्या बना सकते हो? The watchman is so lazy. ये वॉचमैन बहुत आलसी है, लेजी है. और भी बहुत सेंटेंस बना सकते हो आप. यू हैव टू मेक दी सेंटेंसेस बाय योर ओन. आपको खुद से सेंटेंसेस यहाँ पे बनाकर राइट करने हैं विद दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? विच डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन. Adjectives are called describing words which describes about noun और pronoun. ऐसे words जो कि noun या फिर pronoun को describe करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, उन्हें adjectives कहते हैं. We call it as adjectives. Now, so you have to make sentences. क्या करना है? sentences बनाने हैं. You can make these sentences by your daily lives work. अपने आप जो रोज़मर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में आप अपने जो भी वर्क देखते हो, लाइक लेजीनेस, जो भी कलर देखते हो, जो भी चीज़ों को देखते हो, जो भी डिस्क्राइब्ड है, इन चीज़ों से रिलेटेड भी आप सेंटेंस बना के यहाँ पर राइट कर सकते हो. अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जो लेजी है तो आप उसका नाम लिख के कह सकते हो, जैसे ही इज अ लेजी पर्सन, ही और शी इज लेजी बॉय और गर्ल. अगर ब्राउन, या फिर आपको ब्राउन कलर का आपके पास क्या है, या फिर ब्राउन कलर कहाँ होता है, ये आप बता सकते हो. या फिर आपके पास कोई ब्राउन कलर की ड्रेस है जो आपको बहुत पसंद है, वो आप यहाँ राइट कर सकते हो. स्वीट, स्वीट आपको पसंद है या नहीं पसंद है, कौन सा स्वीट पसंद है, ये राइट कर सकते हो. ईजी, आपको क्या ईजी लगता है, आप वो राइट कर सकते हो. अंडरस्टूड? इन दिस वे यू हैव टू मेक सेंटेंसेस बाय दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज ऑफ मैथ्स. Complete the sequence by filling in backward counting. One has already been done for you. So in this, what you have to do is you have to write backward counting. Okay, उल्टी गिनती. Backward counting राइट करनी है, like 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What you will write? You will write the backward counting. Suppose if the number is 18, so you will write 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Suppose if the number is 26, so how will you write? You will write 25, 24, 23, 22, 21. इसी तरीके से आपको बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी, मीन्स उल्टी गिनती लिखनी. उल्टा आप कैसे लिखोगे? जैसे हम लिखते ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने तो फॉरवर्ड काउंटिंग लिखी. अब हमें बैकवर्ड मतलब उल्टा लिखना है इसी को. 10 9 8 7 6 5 4 3
2, 1. Understood? So you have to complete the sequence in each column. हर कॉलम में फर्स्ट नंबर के बाद आपको बैकवर्ड काउंटिंग राइट करके सारे सीक्वेंस को कंप्लीट करना है. Understood? Now let us revise counting from 1 to 100. Speak with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. So, we have read counting from 1 to 100. Let us move to our last section, which is of EVS. The question says match the following. In this, we have to match the pictures with their name. What we have to do is, we have to match the pictures with their name. क्या करना है? इन पिक्चर्स को इनके नेम से मैच करना. लाइक वी विल मैच फ्रूट विथ फ्रूट, flower with flower, leaf with leaf. Understood? In this way we have to match the pictures with fruits. And I hope you can do this. See the next question. Label the given parts. In this we have to label the given parts. एक प्लांट की पिक्चर दी हुई है जिसमें कि सनफ्लावर बना है और लीव्स हैं. इसमें हमें 3 पार्ट्स को लेबल करना है, विच इज स्टेम, लीफ एंड फ्लावर. इन 3 पार्ट्स को हमें लेबल करना है, मीन्स मार्क करना है कि कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है और कौन सा फ्लावर है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस शीट वेरी वेल. इफ यू स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन, एनी टॉपिक, any subject, you can ask me. Thank you.